Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Neha. You must be aware that I have successfully launched our WinNet series 2026 for NTA UGC NET examination for the December cycle and for the subject English Literature. The preparation for the very first videos are underway. The initial videos comprising of the Anglo-Norman, Old English period and Middle English period. And in today's video, I am going to track down and list down a number of books that must be there on your shelf if you're preparing for this attempt of NTA UGC NET December cycle of examination. See, broadly, our subject is divided across history of English literature, literary criticism, literary theory, world literature, contemporary literature. In world literature, we have American literature, Indian literature, Russian literature, African literature. And besides that, there are terms, literary terms and literary movements. That is another sort of very important aspect, not mentioned in our syllabi, but very, very important in its own context, in its own right. So this is practically the syllabi: history, literary criticism, literary theory, world literature, contemporary literature, linguistics, English in India, cultural studies. But tell you this thing, all the things are interconnected to each other. And the aspirant who are going to start their preparation this time now for the very first time, I tell you a list of books that should be there, that you can rely on, because on our YouTube channel, on any other YouTube channel, you get the study material, you get the yardsticks of the topics, but there is always a scope to study more, and these reference books should be there. For history of English literature, I personally recommend, my personal favorite right now is History of English Literature by Edward Elbert. My dear students, for preparing for this WinNet series, I am myself reading this book. I have already read David Ashe's William J. Long for my YouTube preparation, but my current favorite has to be History of English Literature by Edward Elbert. I will link right down the name in the description box, so you do check out that. Second favorite in terms of History of English Literature has to be David Ashe's. But yes, there is one more writer, Indian writer by the name R.D. Trivedi, whose Compendium's History of English Literature is also very reliable. But yes, foreign authors, they are more reliable in order to get that high quality material. And see, first thing first, you cannot understand the works or the writers without alluding to the historical background. You need to have the social, political, religious, historical background understanding of the backdrop in order to understand, for that matter, in order to understand Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, Philip Sidney. So these two become my personal favorite for history, for referring to the analytical material for history of English literature. These two books I recommend. Second area that I'm going to mention besides history is literary terms and literary movements. For that, you need practically in our university colleges also, the moment we take admission in BA English Honors, we are expected to have this book by our side, because that's like a dictionary. Besides English dictionary, for English literature, the dictionary has to be M.H. Abraham's A Glossary of Literary Terms. You need to have this book by your side in order to refer to second reference. Like if you are reading aesthetics, you are reading art for art's sake, you just have to refer to the alphabet A and you will be directed towards all the literary terms starting with the letter A. And besides that, there are other references with which you can refer to in understanding the concept of aesthetics. That's just an example that I'm giving you. Now, for literary theory, I recommend Peter Berry. Has a very different sort of vocabulary, very structured and analytical. So for literary theory, I recommend Pramod K. Nair's book of literary theory. Pramod K. Nair's book of literary theory. And besides that, if your vocabulary is good, you already have clear foundation of literary theory, you can refer to Peter Berry. That's a beginner's guide to literary theory, but very, very good in terms of vocabulary, in sentence structure. That sort of quality material you will get in literary theory. For literary criticism, I recommend for completely literary criticism, for Indian writings in English, for American literature, I refer that you should refer to PYQs, to the canonical writers, to the Nobel laureates, to the Pulitzer laureates, to Sahitya Academy Award winners. You should have
See, if we look at literary criticism for that matter, for literary criticism there are just countable writers are there. For example, if we start with Aristotle, Plato, and after Plato we have Longinus, and then Horace, and then we have Philip Sidney. All these writers, they are just maximum of 20 writers that are there in literary criticism. Literary criticism I'm talking about. So that's, you can rely on online sources in order to complete literary criticism. Online sources and PYQs. PYQs will give you a very clear, comprehensive ideas about the number of writers being asked. You should make a list of writers in literary criticism. I'm talking in Indian writing in English, in American literature, in African literature, and also in case of American literature, yes, there is not an anthology that is available, but since the history of American literature is not asked, you do not need to go into such detail. So my take will be for Indian, for post-colonial contemporary writers, for American writers, African writers, Russian writers, German writers, because these are the post-colonial writers. In Indian writing in English, you have Dalit literature, Dalit writers, Dalit narratives, and English in India, that's just a chronology. You just make a list of writers and आप उन्हें online sources से भी पढ़ सकते हैं. हमारे खुद के YouTube चैनल पर हमने 19th and 20th century American literature को कवर किया है, दलित लिटरेचर को कवर किया है. आप ऑनलाइन सोर्सेज हमारे YouTube चैनल पर आप रिलाई कर सकते हैं लिस्ट ऑफ राइटर्स के लिए. और अफ्रीकन राइटर्स को भी हमने कवर किया है, दलित राइटर्स को कवर किया है, इंग्लिश इन इंडिया को कवर किया है. तो ये स्पेसिफिक बुक्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये रिलायबल बुक्स हैं. मैं आपको बता सकती हूँ इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश के लिए भी, पोस्ट कॉलोनियलिज्म के लिए भी, literary criticism के लिए भी, but I am abstaining myself because in such a short span from July to December आप इतनी मोटी मोटी बुक्स नहीं पढ़ पाएंगे. MHAR Habib for literary criticism एक well in detail. So for literary theory and literary criticism specifically, you should have a list of writers right from Aristotle, Plato, Horace, Longinus up till T.S. Eliot. So there are only a number of countable writers on which you have to prepare this unit, especially when you know that T.S. Eliot's tradition and individual talent is important, Aristotle's poetic is important, Sidney is important, and practical criticism is important. Literary criticism becomes the marker point of literary theory. For literary theory, I have told you Peter Berry and Pramod K. Nair. अगेन लिटरेरी थियोरी का कनेक्ट बनता है कल्चरल स्टडीज से. कल्चरल स्टडीज में भी सेट नंबर ऑफ राइटर्स ही हैं, जिसमें हमारे फ्रैंकफर्ट स्कूल है, हमारे पास बर्गेमैम स्कूल है, CCC स्कूल है, उनके स्पेसिफिक राइटर्स ही हैं. लिटरेरी थियोरी अगर आप कवर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं कल्चरल स्टडीज साथ ही कवर हो जाता है. जैसे कि राइटर्स लाइक मिकेल भक्तिन, Michel Foucault, they are Antonio Gramsci, they are equally the part of literary theory and equally the part of cultural studies. And for cultural studies हमारे YouTube चैनल पर already well in detail 2 to 3 videos available हैं जो हर aspect की बात करते हैं, PYQs की भी बात करते हैं. Now coming over to linguistics. First thing first, I am myself an ardent fan of linguistics, the study of language. अपने YouTube चैनल पर एवरी 10th वीडियो मेरी लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड ही होती है, लेकिन स्पेसिफिकली क्योंकि लिंग्विस्टिक्स एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, तो एक रेफरेंशियल बुक होना ज़रूरी है. तो इन दैट केस आई वुड रिकमेंड आप रिलाई कर सकते हैं द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज ह्यूल. एंड सबसे अच्छी बात क्या है, इस बुक का PDF भी नॉर्मल गूगल बुक्स पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर के व्यू कर सकते हैं. स्टडी ऑफ लैंग्वेज में आपको ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं, इडियोलेक्ट, पिटगिन, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, सोशल लिंग्विस्टिक्स, साइको लिंग्विस्टिक्स एंड ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर. आप जिंदल की बुक आती है लिंग्विस्टिक्स की, आप उस पर भी रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन में फनेटिक्स पूछा जा रहा है तो बाला सुब्रमण्यम की बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो लेकिन अगेन बात वहीं पर आती है, आप कितनी
बुक्स कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों की मायने रखेगी स्मार्ट स्ट्रैटेजी। जब आप जानते हैं कि लिंग्विस्टिक्स के कोर एरियाज कौन से हैं, आप उन्हें ध्यान से पढ़ें, यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू पढ़ें। ये जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स, अगेन मैं बता दूं, कल्चरल स्टडीज़, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेरी थियोरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये सब राइटर्स आप हमारे जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन देते हैं और साथ ही साथ PYQs को भी टेकअप करते हैं। सो ऑन दैट नोट, आज बहुत बात हो गई बुक्स को लेकर के। अभी बुक स्टोर नहीं चले जाना है अमेजॉन पर या किसी लोकल बुक स्टोर पर इन बुक्स को परचेज करने के लिए। वेट कीजिए हमारी विननेट सीरीज जो इसी वीक लॉन्च होने वाली है अपनी फर्स्ट वीडियो के साथ, कर्टन रेजर के साथ, जो वीडियो होगी हमारी ओल्ड इंग्लिश पीरियड के ऊपर, ओल्ड इंग्लिश एंड मिडल इंग्लिश पीरियड के ऊपर। सो स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो। ये जो बुक्स के नेम बताए हैं ये ही मास्टर बुक्स हैं हमारे इस एग्जामिनेशन की और इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी की, जो किसी भी एरिया में आप कर रहे हैं, चाहे वो BA है, चाहे वो MA है, चाहे फिर वो आपका PhD रिसर्च वर्क है, तो आप इन बुक्स पर कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर दिस वीडियो फॉर मोर।